For us, the next topic is equivalent fraction. No, so first it is fraction in lowest form and equivalent fraction. So these two terms they go hand in hand. Lowest form क्या होती है? So any fraction is called in lowest form if numerator and the denominator they have one factor, that is 1. So for example, if I talk about 1 by 2, the numerator is 1, denominator is 2, and जो इनमें common factor है that is only 1, right? So 1 by 2 is in the lowest form. If I say 2 by 3, again जो इनमें common factor है that is 1, right? So it is in the lowest form. But let's say I say 4 by 6. 4 by 6, it is not in the lowest form because they have one common factor that is 2, right? So this is not in the lowest form. So if I divide 4 by 2, it will become 2. If I divide 6 by 2, it will become 3. So it will be come in its lowest form. So कोई भी fraction है उसको अगर हमें lowest form में लेके आना है, so what we will do? We will divide its numerator and denominator by the common factor. For example, let's say that I have a fraction that is 9 by 15 and मुझे इसको lowest form में लेके आना है, right? So if I see 9 and 15, what is the common factor or common number in these two? So 3 is the common factor here, right? So what I will do, I will divide 9 by 3 and I will divide 15 by 3. So my answer would be 3 by 5. So 9 by 5 when converted to lowest form it will become 3 by 5. Okay, so you can convert any fraction into its lowest form. What you have to do, you will have to just find the common factor, that is HCF or the highest common factor, and divide the numerator and denominator by that number. So find HCF of numerator and denominator. Okay, this is the first step to do, and the second would be divide both numerator and denominator by HCF. Okay, so ये step हम लोगों ने करने हैं to convert a fraction into its lowest form. अब हम लोगों का second आता है, then what is equivalent fraction? So equivalent fractions are those fractions that when converted to lowest form they are equal. For example, 2 by 3, 4 by 6, correct? These two are equivalent fractions because when 4 by 6 is converted to lowest term, it becomes 2 by 3. So, how you can find if two equivalent fractions, like two fractions are equivalent or not? So, same thing is that we will check the bigger fraction and then try to convert into its lowest form, और अगर दोनों बराबर आते हैं, so we will say that it is our equivalent fraction. Okay. अब आता है next type of question that can come in your exam is कि आपको एक fraction देंगे, they will say that okay, find 5 equivalent fractions of 2 by 3. ठीक है, अब इसको आप कैसे करोगे सॉल्व? इसको सॉल्व करने का तरीका है, you will start with पहला फ्रैक्शन इज वी नो इट इज 2 by 3, देन इसको 2 से मल्टीप्लाई करो एंड डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करो. वी विल कीप मल्टीप्लाइंग टिल वी रीच 5. ओके, सो 2 को 3 से करो एंड इसके डिनोमिनेटर को भी अगेन 3 से करो, 2 को 4 से करो
थ्री को 4 से करो, देन 2 को 5 से करो, एंड इसके डिनोमिनेटर को भी 5 से करो। तो 2/3 के 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वुड बी 2/3, 4/6, 6/9, 8/12, 10/15. Okay, so this is the way we find equivalent fractions of any fraction. Okay. Okay. Then एक और type के questions that get asked are, they will give you, okay, one more thing. Equivalent fractions, they are equal. Okay, so for example, if I say these two are equivalent fractions, so that means 2/3 is equal to 4/6. Correct? अब एक different type का question that is asked in examination is, let's say they will give you like this is equal to dash by 6. Now you have to find this value. So आप इसको कैसे solve करोगे? So what we can do? Let's see. The easiest way is we will assume that this value is x. So we'll say 2/3 is equal to x/6. अब हम लोग का रूल होता है कि if something is in division in one side of equal sign, when it goes to the opposite side, it becomes multiplication. तो यहाँ पे 6 division में है, right? The rule I'm stating again, rule is कोई भी नंबर अगर इक्वल के एक साइड में डिवीजन की जगह पे है, यानी कि डिनोमिनेटर में है, तो नेक्स्ट जब वो इक्वल की दूसरी साइड में जाएगा, इट विल गो इनटू मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लाई होगा. सो इट इज हियर व्हाट आई विल डू, आई विल से x/6 is equal to 2/3, right? So x is equal to 2/3, और यहाँ पे ये because 6 यहाँ पे division में है, so it will go here and multiply here. Okay, so it will become 12/3. 12/3 means 12 divided by 3, it will be 4. So x is equal to 4. तो आपका यहाँ पे जो होगा, so 2/3 is equal to 4/6, right? यही था यहाँ पे, इसका just हमने 4 को remove करके क्वेश्चन मार्क डाल दिया था, so that we can solve this one. तो ये इको टाइप का क्वेश्चन है that can come in your examination. Let's see. 5/35 is equal to, let's solve this, but अब एक different way से लेके चलेंगे. Okay, so यहाँ पे डिनोमिनेटर में 35 है, यहाँ पे 7 है, right? तो 7 को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं कि it becomes 35. तो 7 की टेबल में 35 आता है 5 पे, so that means कि अगर मैं 7 को 5 से मल्टीप्लाई करूं, it will become 35. Correct? So let's do one thing. I'll do 7/35 is equal to x, 7 into 5. करेक्ट? अब क्योंकि नीचे मल्टीप्लाई किया है तो मेरे को ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट द नंबर रिमेन्स सेम. अगर मैं सिर्फ नीचे कर दूंगी तो नीचे का नंबर बढ़ जाएगा, बट ऊपर का सेम नहीं रहेगा, तो ये मेरे इक्वल नहीं रहेंगे. बिकॉज मुझे इनको इक्वल भी रखना है, तो आई विल डू मल्टीप्लीकेशन इन द न्यूमरेटर एंड मल्टीप्लीकेशन इन द डिनोमिनेटर बोथ. ओके, तो अब देखिए 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 बनता है 3 से, तो x इज इक्वल टू 3. सो एक तो ये तरीका है कि हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं कि किससे मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर को करें, या वट एवर नंबर इज गिवन उसको किससे मल्टीप्लाई करें कि उसके सामने वाला नंबर हमें मिलेगा. अनदर वे जो हम लोगों ने यहाँ पे किया था ऊपर, राइट, इधर इस वाले इसमें, इस एरिया में, राइट, इसको हम कैसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे 15/35 इज इक्वल टू x/7, राइट. तो 7 ऊपर जाएगा बिकॉज 7 यहाँ पे डिवीजन में है, तो लेट्स रीराइट इट. x/7 इज इक्वल टू 15/35, x इज इक्वल टू 15/35, और ये आपका ऊपर 7 जाएगा, राइट. अब 7 और 35, राइट,
7 ones are 7, 7 fives are 35, क्योंकि there is something common, that is a common factor. 35 7 की टेबल में आता है. Now it is equal to 15 by 5 and this is equal to 3 because 5 ones are 5, 5 threes are 15. तो x is equal to 3. So आपके पास दो तरीके हैं सॉल्व करने के. whichever way you are comfortable, आप वो तरीका यूज कर सकते हैं and then your answer will be the right one. Thank you so much.